Good evening, all. We'll start shortly. All right, so welcome all in our weekly webinar Market Masterclass with Religare. Most of you know, for those who are joining us for the first time. So, in this webinar, we prepare for the next week, means how the Nifty banking index sectors are aligned after this week's of move, which sector to focus, which to avoid, stocks to keep an eye on. Everything will cover in next 20 minutes, followed by the Q&A session. So in case if you have any question related to any particular sector, theme, stocks, during the Q&A, you can ask those questions by using that Q&A button, which is there in front of your screen, a question mark button. So just press that, write your query and send it to us. सो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीकली वेबिनार में। और इस वेबिनार का यही पर्पस रहता है हमेशा कि हम नेक्स्ट वीक के लिए एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाए हमको कि किस तरीके से पोजीशनिंग करनी है मार्केट में, क्या रहेगा निफ्टी में, बैंकिंग इंडेक्स में किस तरीके का टोन है, कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना है, ये सब कुछ बात करेंगे हम। उसके बाद कोई सवाल अगर आपका रहता है तो एक Q&A सेशन होगा सवाल जवाब का, जो कि क्वेश्चन मार्क का एक बटन जो आपकी स्क्रीन पे Q&A का बटन बना हुआ है, उसको प्रेस करके आपको लिखकर पूछना होगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट with a disclaimer first that it's a informational webinar. It's not a trading or investment recommendation. So before you make any decision based on the information shared, please check with your financial advisor. जो भी हम बात करने वाले हैं बेसिकली कोई भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। उससे पहले कि आप इंफॉर्मेशन को यूज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर बात करें। So this is how the markets ended this week. As you can see, that 3% kind of a cut for Nifty Sensex. Only pharma ended on a flat note. Rest of the sectors, realty, banking, media, financials, auto, all in red, right? In the range of 4 to 4.5%. Among the top 5 gainers, losers in the Nifty, BEL top the list, followed by Hindalco, Sun Pharma, Coal India, Dr. Reddy's. Losing side cuts were very sharp. Top losers, Indigo, followed by Tata Motor Passenger Vehicle, L&T, SDFC Life, and Shriram Finance. Broader markets largely also ended with the similar cuts, roughly around 2.5% kind of a cut for Nifty mid cap and small cap index as well. तो ये पूरे हफ्ते का जो एक स्नैपशॉट है, इससे क्या समझ आ रहा है कि चौतरफा जो वीकनेस, चाहे वो बेंचमार्क की हो, चाहे वो सेक्टोरल हो, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हो, या फिर ब्रॉडर मार्केट्स, हर तरीके से मार्केट में प्रेशर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड था। लास्ट वीक जिस तरीके से हमने बात की थी कि फ्राइडे के दिन जो निफ्टी ने क्रिटिकल सपोर्ट ब्रीच किए थे, उसके बाद जो गैप की हम बात कर रहे थे काफी टाइम से कि इंडिया यूएस ट्रेड डील का जो गैप था 2500 का, उसको फिल करने का, तो वो सारी चीजें हो गई और इस तरीके के नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिली। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक क्या करना है, किस तरीके से पोजीशनिंग है। अर्लियर वी वर यूजिंग डेली चार्ट, but I felt that the daily chart of Nifty is not going to help us much in today's webinar, considering that the kind of decline that we have already experienced and whatever gap that we were discussing, it's almost over now. So weekly graph is important and this is something that you should be focusing on. So as you can see that it's a weekly graph of Nifty index, rising channel, multiple time of retest of this lower band, as you can see here also, and then a rebound. This time a breakdown. What happens next after, like, the instrument exits that channel is the retest of the next critical support. So here the 100 days of weekly exponential moving average placed around 24,000
is the next major support for Nifty. देखिए ये काफी लंबे पीरियड का आपका इंडेक्स का ग्राफ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब इंडेक्स निफ्टी 15,000 के अराउंड होता था, तब से लेकर अभी तक का सारा डेटा को हमने कैप्चर किया है और एक चैनल ड्रॉ किया जिसको रिस्पेक्ट करता आ रहा है काफी लंबे टाइम से। हाल फिलहाल में इसको ब्रेक करना, उसके नीचे आना, वो एक टेंडेंसी दिखी है अपने को। जैसे यहाँ पे हुआ था ब्रेक, और इसके बाद इस वीक एक डिसाइसिव ब्रेक हुआ है, राइट। तो उसके बाद जब भी आप चैनल को एग्जिट करते हुए देखते हैं, बेसिकली चैनल या कोई भी इस तरीके का ट्रेंड लाइन क्या दिखाता है कि ट्रेंड कैसा है, मोमेंटम कैसा है। तो अगर कोई चीज लेट्स से 60 डिग्री पे पहले बढ़ रही थी और उसका मोमेंटम लूज हुआ, just to give you an example, if you throw a ball like upward, so initially it will go higher at a rapid pace, right? But eventually it will lose steam and then start inching gradually lower. Same holds true for markets also, right? कोई अगर आप बॉल हवा में उछालते हैं तो क्या होता है कि इनिशियली तो पहले वो तेज जाती है, राइट। जैसे जैसे उसका मोमेंटम खत्म हो रहा होता है वो धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू होता है। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर मार्केट। तो पहले आप एक मोमेंटम पकड़े होते हैं, जब वो मोमेंटम पे डेंट पड़ना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में रिस्क बढ़ जाता है। और वही अभी चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वीकली ग्राफ है, ये डेली ग्राफ की हम बात नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये काफी एक लंबे पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जब इस तरीके का ब्रेकडाउन हुआ है, सो द पॉसिबिलिटी कि ये 24,000 जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट है, जिसको इसने रिस्पेक्ट किया है 100 EMA को, जैसे इस ओकेजन पे भी आके आपने 100 EMA, ये दोनों ही कोइंसाइड ही कर रहे थे, राइट। इस बार उससे पहले ये मूव कर गया ऊपर, तो 24,000 के पास करीब करीब आपका जो 100 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो आता है। तो इन अ वे आपको 24,000 ध्यान रखना है फॉर द नेक्स्ट वीक, जब तक अ, हम ऊपर में 24,600 को होल्ड करके सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक रिस्क रहेगा नीचे का 24,000 का, राइट। ये क्लैरिकल मिस्टेक है। दैट रेजिस्टेंस इज 24,600 एंड 24,900, राइट। तो इस तरीके के चैलेंजेस मार्केट में अभी फेस करने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट, टोन इज नेगेटिव एंड पॉसिबिलिटी ऑफ निफ्टी टेस्टिंग 24,000 इज हाई। अगर वो ब्रेक हो गया देन आपका 23,800 नेक्स्ट सपोर्ट होगा। उससे पहले एक मार्जिन सपोर्ट 24,300 जो कि आपका इमीडिएट स्विंग लो है, वो एक तरीके से हेल्प कर रहा है। बट लार्जली आप मान के चलिए कि 24,000 के लिए मार्केट इंडिकेशन दे रहा है अभी, राइट। व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मार्केट इज indicating more towards further decline because of this, because of banking. Till last week banking was here, यहाँ पे हम थे बैंकिंग इंडेक्स में, राइट। A clear cut out performance, but this week it turned out to be completely disaster for banking index. Means uh, just in a single week we have surrendered 20 EMA, we have surrendered 100 EMA, and now we are inching towards the long term moving average in the banking index. So जो भी आउट परफॉर्मेंस थी बैंकिंग की, वो काफी हद तक सबसाइड हो गई इस डिक्लाइन में। As you can see that this zone last time we have rebounded, so we have retested that area. We are very close to the long-term moving average. Last time also we have respected this mark and recovered swiftly. So this is going to be a critical support zone to watch out for in banking index, right? So 57,400 is the area where we have the
200 days of exponential moving average placed in the banking index. In case if it breaks, then 56,000, maybe close to around this area, the last, reversal uh, zone. As you can see, that's what head and shoulder. So around the neckline area of this zone, it might test. In case of recovery, this 59,000, the 100 EMA mark, and then 60,000, close to around the 20 EMA, is something that banking is going to face strong resistance. तो देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि लास्ट वीक तक सिनेरियो ये था कि बैंकिंग काफी स्ट्रांगली अपने रिकॉर्ड हाइस के पास था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक कंफर्ट था कि मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है वो आईटी लेड है, और जल्दी सिनेरियो इम्प्रूव होगा तो फिर बैंकिंग की आउट परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल सकती है. बट ओवर द वीकेंड जिस तरीके से ये वॉर वाला सिनेरियो अनफोल्ड हो गया मार्केट के लिए, जिसमें पहले तो बैंकिंग ने स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की, बट इवेंचुअली यहाँ पे भी प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से जो भी आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे थे वो काफी हद तक सबसाइड हो गई, और यहाँ पे भी आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास आ गए हैं. तो जैसे हमने बात की कि 24,000 बैंकिंग इंडेक्स के लिए, निफ्टी के लिए यहाँ पे आपको 57,400 जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ध्यान रखना है, राइट. सो फॉर निफ्टी 24,000 and for banking index 57,400. These are the two key levels that you should keep a close eye on in the next week, right? Private banking majors looking comparatively weaker. Select PSUs are showing strength, but it's too early to call a reversal for them. Select PSUs, they were in fact trading in positive while the banking was down today. So in case if there'll be any stability and recovery in banking, PSUs might outperform. तो PSUs जो आपके बैंकिंग है काउंटर्स वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं जब भी मार्केट में आपको खासतौर से बैंकिंग इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिलेगी. तो अकॉर्डिंगली यू शुड प्लान. सो दिस इज अबाउट बोथ निफ्टी एंड द बैंकिंग इंडेक्स की टोन नेगेटिव है, and we are very close to the support zones also, means 24,000 and 57,400. But it is not enough to take a contrarian bet. मीन्स आप सपोर्ट के नजदीक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगी और वापस घूम जाएगी, ये जरूरी नहीं है. तो यू शुड प्लान योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली. मीन्स व्हाट इफ ये कंटिन्यू रहता है, व्हाट इफ आपको लेवल्स पता लग गए हैं कि इन लेवल्स के पास में सपोर्ट है, तो हो सकता है कि यहाँ से रिकवरी आए या बाउंस आए. बट नहीं होता है तो क्या होगा, तो जो सेक्टर्स और जो थीम्स जहां पे स्ट्रेंथ है केवल वहीं पे हम बने रहेंगे, बाकी और किसी चीज को देखेंगे नहीं, राइट. सी द ओनली थिंग दैट वी हैव इन आवर हैंड इज टू मैनेज आवर ओन रिस्क. We can't do much when it comes to the overall decline in the index, stocks, sectors. What we can do is we can identify pockets, sectors, themes wherein strength is there. So what all sectors and theme that you should be focusing on? So first, pharma. This week also we showed pharma was the only index at the beginning. You must have seen that ended almost on a flat note. Then select PSCs. PSCs means public sector companies, PSUs. They are showing strength. Defense, that also is showing noticeable recovery and indication that there could be a strong move in the coming weeks. Apart from that, selectively we might find buying interest from the metal counters, select energy counters, and like PSU banks if the banking holds this critical support. तो जो सेक्टर्स को आपको ध्यान रखना है आप नेक्स्ट वीक में, वो पहले तो फार्मा है जहां पे की स्ट्रेंथ दिख रही है, साथ ही साथ मेटल के कुछ काउंटर्स हैं जहां पे स्ट्रेंथ बनी हुई है. इसके अलावा जो
सरकारी कंपनियां हैं वहां पे काफी सारे नाम हैं जो आपको पॉजिटिव साइड पे मिल जाएंगे, जहां पे स्ट्रेंथ है। और डिफेंस एक ऐसा स्पेस है जहां पे कि आपको फोकस करना चाहिए, कंसिडरिंग कि एक अच्छा कंसोलिडेशन, करीब साल 1.5 साल का कंसोलिडेशन, वो अब एंड होता हुआ नजर आ रहा है डिफेंस स्पेस में, राइट? Basis that we usually talk about stocks, right? Which stocks to focus? It's not a stock; it's a ETF. It's a defense ETF, MO Defense. So we have, if I'm not wrong, only two ETFs at present for defense index. So there are two ways, one can trade or invest in particular sector. One is to go outrightly and buy the stock, uh, which are showing relatively high strength. So in defense space, BEL, data patterns, uh, Astra Micro, these are some of the names wherein we are seeing relatively higher strength. The other way is that, you know, chances of going wrong is high when you bet on individual names. So if we have a ETF, right, which invest in all these stocks, so that is the better approach, especially in the market like this, wherein we are seeing underperformance or chances of further correction. So MO Defense is one ETF where, as you can see, that it was a consolidation, a prolonged consolidation in line with the sector. And now, this week, a noticeable interest in volume and price. Both were aligned and we've ended on a strong footing. Earlier, if you every week come here, it's a red candle. This time it's a green candle or a decisive green candle. So possibility of inching higher is comparatively much stronger, uh, comparing with the previous instances. So देखिए, जैसे हमने बात की कि थीम्स कौन कौन सी फोकस करनी है, तो डिफेंस की भी बात की। तो डिफेंस में बेसिकली आप किसी भी थीम में आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो दो तरीके होते हैं, या तो आप स्टॉक में बाय करें जो सेक्टर का अच्छा परफॉर्मर है, या फिर आप आ, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां से कि आपको पूरे सेक्टर पे एक्सपोजर मिल जाए। तो ऐसा ही एक जो ईटीएफ है, जो डिफेंस के जितने भी काउंटर्स हैं, बड़े काउंटर, अच्छे काउंटर्स, इन सभी में इन्वेस्ट करता है, वो है आपका एमओ डिफेंस। तो इसमें काफी लंबे टाइम बाद, जैसे कि स्टॉक्स में होता है जिस तरीके की प्राइस मूव, वैसे ही इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक तेजी के इंडिकेशन बन रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि स्टॉक्स में जैसे कि बीईएल है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इस एट द रिकॉर्ड हाई, डेटा पैटर्न रिकॉर्ड हाई पे है। पॉसिबिलिटी ये है कि लेट्स से कि वो आउट परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते चलें और तेजी चलती जाए। बट व्हाट इफ अगर वो रुक जाते हैं और मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, दूसरे काउंटर्स चलने लग जाएंगे, तो क्या होगा? तो सारे स्टॉक्स तो आप बाय नहीं कर सकते। बेटर ये है कि आप अगर सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो ईटीएफ के थ्रू जाएं, राइट? तो एमओ डिफेंस टू प्ले द एक्सपोजर in defense sector, considering its breakout after this prolonged consolidation. Okay. Next, pharma. So pharma, here also means it's a prolonged consolidation which has recently ended for the index, but for some of these stocks, we are still on the verge of inching towards the actual reversal point, and Sun Pharma is one such name. So as you can see that decent phase of consolidation, and now the stock is set to retest the trendline hurdle, right? So indications are in the favor that we might see the breakout, possibly by a next directional move towards a newer high. So this is also something that one can focus, considering the stability in the pharma index.
तो देखिए फार्मा, जैसे हमने बात की थी कि डिफेंस के साथ फार्मा जिस पे आपका फोकस होना चाहिए, जहां पे कि स्टेबिलिटी दिख रही है, अगर लॉन्ग साइड की हम बात करें तो यहाँ पे सन फार्मा जिसने कि एक अच्छा कंसोलिडेशन में टाइम स्पेंड कर दिया है। अब जो ये ट्रेंड लाइन है जिसको ये 2 बार टेस्ट कर चुका है, इस बार आके एक ब्रेक की पॉसिबिलिटी होना इज क्वाइट पॉसिबल, और उसके बाद फिर नए रिकॉर्ड हाइस की तरफ ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो इसको डेफिनेटली आप फोकस कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फॉर दी कमिंग वीक्स। Lastly, as we are talking about index testing 24,000 mark, or possibility of other sectors, like though we are seeing bit of stability in IT now, but IT, realty, and FMCG. If you remember, go back and see our previous videos. Three sectors which we kept on mentioning on the weak side or avoid list for long position. So FMCG, HUL specifically, as you can see, it's going nowhere. Like, 27,000, 2760, 2800 on the upside, 2100, 1860 on the downside. Broadly, this 700, 800 point kind of a range. So here also, in this portion, we were seeing bit of tussle, means a 1 week of green candle, red candle, green candle, red candle, and finally a breakdown this week. So what this indicates is that possibility of retesting the previous swing low or inch further lower is high. तो देखिए, जो सेक्टर्स की हमने बात की, हमने तेजी की बात कर ली, और नेगेटिव पे जो हमने अभी तक बात करते आ रहे हैं काफी टाइम से, कि आईटी, रियलिटी और सेलेक्ट एफएमसीजी जहां पे की वीकनेस है, इनको आपको अवॉइड करना है, उनको आपको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं आप। तो वैसा ही इंडिकेशन अभी भी है एचयूएल में कि एक टाइट रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, इस वीक उसमें ब्रेकडाउन आ गया, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको प्रेशर आने वाले टाइम में और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। राइट। सो केवल लॉन्ग साइड पे नहीं देखना है, अगर मार्केट बोल रही है कि नेगेटिव साइड पे, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी है। फ्यूचर शॉर्ट ना करके, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, थ्रू ऑप्शन स्ट्रेटजीज वो सेफ होता है। राइट। कि सिंपल एक पुट स्प्रेड बनाया, उस तरीके से प्ले किया, इंस्टेड ऑफ लाइक नेकेड आपकी ओटीएम ऑप्शंस बाय करना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, स्पेशली अगर आप नए हैं तो। वो एक तरीका होता है। राइट। सो नेट नेट, निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स टोन बोथ नेगेटिव, 24,000, 57, 400, 600 for banking index. Sectorally, pharma, PSUs, select energy, and defense, positive tone, negative side or underperformance, FMCG, reality, and IT. राइट। तो नेक्स्ट वीक के लिए, जैसे कि हमने बात की, उसको समराइज करें अगर 2 लाइनों में, तो कि टोन इंडेक्स का नेगेटिव है, बैंकिंग इंडेक्स का नेगेटिव है, निफ्टी और बैंकिंग इंडेक्स का। 24,000 को आपको ध्यान रखना है निफ्टी में, ये ग्रीन लाइन जो है, और इसमें आपका 57,400 बैंकिंग इंडेक्स में जो रेड लाइन है, ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेक्टर स्पेसिफिक हमने जैसे बात की कि फार्मा को एनर्जी सेलेक्ट काउंटर्स, मेटल के सेलेक्ट काउंटर्स, डिफेंस, पीएसयूज जहाँ पे स्ट्रेंथ है, वीकनेस पे आईटी और आपका एफएमसीजी और सेलेक्ट रियलिटी काउंटर्स। राइट। स्टॉक स्पेसिफिक या थीम स्पेसिफिक, एमओ डिफेंस, डिफेंस ईटीएफ, सन फार्मा फ्रॉम दी फार्मा बास्केट, एंड लास्टली HUL or as a short candidate on the watch list. Right. So this is all from the presentation. Let's do a quick feedback poll. Can we have a quick feedback poll, team?
Okay, I guess there is some issue with the poll today. So let's start with Q&A right away. So in case if you have any question, use that Q&A button in front of your screen. कोई भी सवाल है जो क्वेश्चन मार्क का बटन है, इसको प्रेस करके आप अपना सवाल लिखकर पूछ सकते हैं. Right? Okay, so we have feedback live. So please fill in your feedback and then you can start posting your questions. Those who are done with the feedback, they can start posting their questions. जिन जिन का हो गया है अपने सवाल लिखकर आप पूछ सकते हैं अब. All right, we are almost done with the feedback now. So let's start with Q&A. Okay, so first we have Syantan Basak. Which sector is best now? So there's no one sector which we can pinpoint. Means especially in a market like this, wherein we are seeing rotation, means not one sector which is continuously performing well. So like what we've shared, pharma and defense, these two themes definitely should be on your radar, wherein we see strength, and then selectively from the others also, like from the PSU basket, uh, be it energy, banking, that is something also you should be focusing on. Okay. Next, we have Snehansh on, are we going in bear market or not? So, Snehansh, it's too early to call this. See, index, what is the criteria, by the way? Means when we call it a bear market, then once the underlying corrects 20% from the highs. So, are we saying that we are like, entering into a bear market? So that's not the scenario yet. And for that to unfold, of course, the crude for us, for India as an economy, crude definitely is the biggest factor. And why we are seeing this kind of uh, reaction in our markets, because crude has inched towards $85 per barrel mark in Brent, and there's no sign of de-escalation in the war. So in such a scenario, uh, and especially the VIX volatility index is up roughly around 40% in this week. So we cannot rule out any possibility, and we should rather not try to predict the market, rather stay with the markets. Means stay with the trend, and what the trend says that the tone is negative. Around 24,000, 23,800, we'll see whether the market holds or not, how banking and other sectors perform, and then take a call. So don't preempt or look for any kind of uh, you know scenario wherein one panics. Just stay in line with the trend. Okay. Okay. Power stocks. Muhammad Azruddin has this question. See, demand is getting increased. There's no doubt about it. But it should reflect in numbers. Numbers as in the earnings. So that depends again, because this time around we are seeing possibility of summers being early,
and strong. So that definitely bodes well for the power companies. And of course, the recent developments related to EV and new technology, data center and all, but it's take time. Like it's going to take time to materialize completely. So as of now, we are not seeing any major trend unfolding in power counters, but yes, selectively, stock like NTPC, Power Grid, they are doing well. So selectively, one can definitely focus on the opportunities. Okay, next is Kumaran on sugar sector. So basically, we were seeing a bit of an interest at the beginning of the week, but as the moved out, I doubt that we could sustain those gains. Yeah, so again, we are seeing like Balrampur or you know other sugar companies, not much to celebrate. So sugar, in fact, as a sector, is something that you should refrain for any directional view, right? So prudent to avoid is what we recommend. Okay, next we have again a question on ICICI Pru Life. So life insurance counters, in fact, after this initial surge, we are seeing like um, profit taking phase in line with what we are seeing in the market. So SBI Life is among the top performing name. This week it was down roughly around 4%. ICICI Pru also, after this strong move, we are seeing correction. Uh, Close to around 604 to 590. That's the zone basically where we have multiple supports. So fresh buying one should avoid until it stabilizes around the support area and forms some sign of reversal candle. तो जब तक कि ये आपका 590 605 के जोन में आके रुकता नहीं है, कुछ कंसोलिडेट नहीं करता है, तब तक बाइंग की फ्रेश बाइंग की नहीं सोचना है. एंड 605 एरिया है जो कि सपोर्ट है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस इफ यू हैव एग्जिस्टिंग पोजीशन. ओके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अरविंद गुप्ता है दिस क्वेश्चन. Okay, so still no sign of respite. Stock at 52, record low, and still inching lower. So honestly, there is no sign of reversal or recovery. And in case if it sees any bounce, 85, 87, 87, 88 is a strong hurdle area now. So if your view is short term, prudent to exit, take loss and exit. Okay. So yeah, Rajesh, you are right. We cannot discuss about our own counters or group companies. So that's why. Okay. Sandeep Shah has this question. Sandeep, we have already answered about which sectors to invest in, like pharma, uh, select energy counters, PSUs, defense, and select metal counters. This is something that you should be focusing on considering the current market scenario. Okay. So largely we have answered all the queries, couple of more stock specific queries, I guess, but yeah, we are largely done. So thank you everyone for joining in, and next week, same time, same place, we'll connect again. We'll discuss about markets and, you know, ideas also. So we'll connect again. Thank you.